Okay, let's start with the lecture. If you remember in the previous class, we discussed about the different types of coordinates types and coordinate systems. These were the different types we were talking about: the Cartesian coordinates, polar coordinates, cylindrical coordinates, and spherical coordinates. Then we talk about the different types of systems of coordinates, like we have relative system and absolute system. And if you remember, we solved this problem that we can give input in the form of relative or in the form of absolute, and that is totally depending upon the figure given, the diagram or the drawing given. Basically we get all these information, and from the drawing that whether dimensions are in relative or in absolute or in Cartesian or polar. So if you remember, we also solved a problem uh, on the whiteboard. We draw some dimensions and ask you people to show me where which dimension is in polar and which dimension is relative. So if you know all these things, then we can proceed to talk about the different types of or drawing tools, drawing commands, because we will be entering values in such format, like we'll be using relative, absolute, etc. If you look at this figure, if it is visible to you people, let me make it to full screen. If it is visible to you people, so you must be able to understand this thing. This is basically a square. You can say its dimensions are 8.5 cross 8.5, and we are trying to draw this square with the help of line command. And we are using basically which type of coordinates over here? We are using two types of coordinates over here. As the line one, if we're going like this one, we are going like this one. So have to start the starting point of this line from 4 comma 4, because it is given and we are bound to do this. Then we have to give the dimensions. So as we will be giving a dimension from the starting point, so we have to give the value at the with the at symbol, and this is the length of this line segment, and we are not going, this is a Cartesian coordinate, so we are going 0 on the y coordinate with reference to this origin now, because we have put the at the red before the order pair. Similarly, over here we are going 8.5 over here, so we are not going on x direction, we are only in z direction, sorry, y direction. So we are putting the 8.5 over here, and so on. Minus is over here because plus x is on this side, and minus, you can put the minus 8.5, or you can put the c number, c digit letter. It tells the line command to make it close. So we will just draw this thing in the CAD, and we can we can draw anything like this one using the line command. Uh, you should keep in mind that when we say line command, we means we are talking about a straight line for which we need at least two coordinates to be there. If we have two coordinates of the line command, then we can write very easily. Okay, is my screen visible to you people? I have changed it to the CAD now. Yes, Yes, sir, sir. it is. Okay, then now. So let me draw that thing, and you just see that what I'm doing over here. To activate a line command, I repeat it. We have three methods we did in the previous class. We have relative we have to enter a value command li, or shortcut key, or full name in the command prompt, or we can activate it from the menu bar, draw menu bar, or we can just put it activate it from the toolbar, which is a draw toolbar. So we will talk about all. Uh, we will try to cover all the commands in the draw toolbar in today's class. So when you activate a line command, I'm using L for the line command. Sorry, and it asking me specify the first point. So if I want to draw that rectangular portion which is over here, if you want to see it again, it should be visible to you people that we are trying to draw a rectangle. Let's make it 9 cross 9 instead of 8.5 to be easy to give input values, and the starting value is 4.5. So you can see what I'm doing over here. It is asking me specify first point. What will be our first point over here? Anybody please? पहले मेरे साथ इंटरेक्ट किया करे ताकि ये चीज जो है थोड़ा सा
मुझे पता चले कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. At least one guy in the class. 4. What should be the starting point for the starting ordinate or starting point for this line segment? This one, because we are starting from here. Sir, 4. Sir, 4, 5. 4 comma 5. The only 4 is not ever enough, because we want to define a point, and in Cartesian coordinate, if you want to define a point, you must have the at least two coordinates in two directions, because we are in xy and we are in 2D. So you must have at least two dimensions, x and y. So the 4 is only x. It is not telling us anything unless until we define the y. If you are saying only x 4, so you must say 4 comma 0, then this will be this point on the x-axis. So you have just recorded this thing, you have just noted this thing, now we are going to try right. Let's make it at 9 cross 9. This must be clear, it's not that different, but just a point difference. हम इसको भी ड्रा कर सकते हैं, बल्कि चलिए इसे को ड्रा कर लेते हैं, 8.5 को ही ड्रा कर लेते हैं. So I'm it is asking me the first point, as we want to start from the 4 comma 4, so I just put 4 comma 5. Enter. Now it is asking me, do you want to specify the next point or undo? As I told you in the previous class, that whenever you see something with in a curly square brackets, it means this thing is the option available. Do you want to undo this point selection, or you can do it with Control Z as well, or do you want to proceed? So if I want to proceed, I will put at the rate. I want to go 8.5 on the x-axis and do not want to go change the, I want raw horizontal line. So I will go 8.5 comma 0. It should be clear. Now it is asking me again specify the next point. So I must give at the rate 0 comma 8.5. Again drawing it. Then again it is asking me. Now we have drawn two segments, so then another option activated over here. It is asking, do you want to close it? When you start drawing object from the start point and you want to close it, you just press the C key. It will automatically bring it to the initial position. It will close it. So we don't want to close it right now. We want to continue to complete the rectangle. So I will again put the at the rate minus 8.5 comma 0. As I am going on horizontal axis in the opposite x-axis, it will do it. Now I can do it by two methods to bring it over here. I can just click over here, or I can press the C, because this is written in the capital, and I can just write the C over here. I told you that anything in the curly brackets tells us the options available and how to activate those up, and we will look for the capital letter. If you want to activate the undo, you will just select U, and you will enter E basically, and if you want to select the close, it will be C. So if I press C, enter C and press enter, it will be automatically come automatically to the initial position from where we have started. Now you can see we have drawn our rectangle, and which is of these dimensions. Is this clear? Hello? If there is Yes, any sir. problem, we can Yes, sir. solve it. So Yes, this is sir. how we can draw the different types of lines. This is not only the one option. We can draw many things. Okay? You just look at this figure. We are just changing the angle. We are following the dimension like this one, and we are changing the figure, and we can draw it. If you want to draw it, start from 4 comma 4 and then put at the rate 8.5 at the angle of 45. It will come over here. You just put these values yourself, and you will get this rectangle or square over here drawn very easily. So this is how we use the line command to draw different types of things. This is one type of line. Okay, Janab. Now, and as I told you in the previous class, that there is no connectivity between the two line segments. You can see I can select this one, I can select this one individually. I can delete it, I can move it. It has only one common point, which is this one only. It means that
this point, if this line segment has a starting point this one and the ending point this one, but this one has a starting point this one and the ending point this one, so there is no connectivity between these two line segments because these are drawn with the line command. Now there is another type of line used in the CAD. We call it construction line or X line. You should have your notebook and write in something because these are very important. The next line, which is called construction line, or uh, we also call it X line. You can see over here. We will talk about ray after a while. This is a construction line XL, or you can see it is over here. As its name suggests, that this is not the we use this line for the construction purposes. It has infinite lengths. We cannot find its endpoints. It will be always covering the whole screen. If I draw a simple construction line, let's say it's a construction line, I'm drawing out here. You can see I have just drawn a single construction line, and we are unable to see its endpoints. You can see the more you zoom it out, you will not be able to see it. It will be right over there. It's not working. Okay. So you can see these are the lines, these are used for helping the construction. If you remember, while drawing the first angle or the angle of projections, basically, you were using some kind of line, projections lines from one view to another view. And those lines were there just for projection purpose. And then when you complete your projection, you remove it. So we use this type of lines to construct something. I will show you how we use it for the construction of different types of things. ठीक हो गया जनाब. So the difference between a construction line and straight line, normal line is it has infinite length. And in construction line, we have different types of options. Like the one I draw over here was just a simple construction line. We can activate it by X shortcut command, X line, XL. And you can see in the brackets it has four options over here. Options basically normally. Horizontal line, vertical line, angular line, bisection line, and offset line. What does this mean? I just want to draw a single simple construction line, so I will just click over here and then we'll define its direction. In which direction do I want to draw? Okay, I can select any point. If I want to select this one, if I want to select this one, if I want to select this one, I will just use any of the line. It will be drawing different types of construction lines. But if I want to draw a construction line with a particular property, like I want to draw only horizontal lines, if I want to draw only vertical lines or angular lines, so I can do it. I'm activating the command, repeating the command from the upper arrow key. If you remember, I told you that you can repeat the command from the upper arrow. So when I press Excel and then press enter, so it is giving me options. Do you want to draw only horizontal line? Do you want to draw only vertical line? Do you want to draw angular line? So I will start from the horizontal H. You can see why I'm writing H, because the H is written in capital. If I want to activate vertical, then I have to put V over here and press enter. Then it is drawing only horizontal line. Any point on which you are clicking, it is drawing basically horizontal section lines. And you just need to define a point because it has infinite length, so it will be drawing it, passing the line through that point. You might have heard about ray in geometry. Ray has start point and end point, infinite arbit. It can be drawn on infinite arbitrary points. You just have to its start point. Okay, now if I want to draw for a vertical horizontal line, so I will again come out of the command, will go again to the construction line, and now I am selecting V for the vertical. And now you can see my control is changed to the vertical, and I'm only able to draw vertical lines over here.
Not able to draw any horizontal line over here. I'm just clicking on any point. You can give a value from the crosshair. Let's say I'm giving uh, 4 comma 5. You will see the line will be drawn at this point because we have this is our 4 comma 5. If I draw any value, let's say minus 10 comma 10, it will be drawn over there. You just need to find a point over here. Now if I go again to the construction line, we can have angular line A for the angular. Now we can define the angle. Let's say I want to draw angle at 45 degree. I will select 45. Now you can see all the lines are at 45. And these are helping us when you drawing different types of drawings. We will use it in the projection of different objects and also some other drawings you will see its use. You just need to know how to construction line right now. Draw a construction line right now. I'm again coming out. I'm pressing escape for the coming out of the command. Again, construction line, and the next is bisect. Before bisect and offset, I will just delete all the lines that I have on the screen. If you want to clear your screen, so it has the simplest method to do it. The one method is you just click over here and draw it. You will select, but this will not be easy to select all the things here. You might miss something. You are selecting like this one, but easiest method to clear your screen is we are selecting all the things because we are using the cross window. You will not be able to select anything with the solid window because other than this rectangle because it is infinite length, so we cannot cover its whole object. We cannot cover the whole object. We are only able to select this rectangle which is drawn with the line cover. If I want to clear your screen, so it has the simplest key. We will use E. It's a modify command. E is for erase. I will press E, then enter. It is asking me select object. I will say okay, enter. As all the objects are selected, then I will press again enter. All the objects will be deleted. So the key to erase all the things on the screen is E for erase, enter, write all, and then enter 2 times. All the things will be deleted. I repeat, E, enter, all, enter, and enter. Are you people there? Hello? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. ठीक है जनाब. So you can delete all the things on the screen. Another thing, let's say I'm bringing it back. When you have some things on the screen that are too much out of zoom or there are too much zoom in and zoom in, let's say I'm doing it and it just uh, moving to somewhere else. Let's say that the object is like this one. I'm unable to bring it back to the screen. Exactly. I'm using the mouse wheel. I don't know the exact name of this thing, but we call it mouse wheel. The scroll key, you can say, scroll wheel. Just moving it up and down, and it is zooming in and zooming out. So you can say I cannot bring it exactly just like it was before. So if you want to refit your zoom or to zoom fit your screen, there's another key like we use a key Z, Z, enter, A, enter. You must have notebook and you must be writing these things. That Z or Z, enter, A, enter. Sorry. Z, enter, A, enter. So what it will do, just look at this thing. Z, enter, A, enter. All the things are adjusted to your screen, and it is not that measurable in the construction line. You will be easily be able to see the objects that you have done because the construction lines are infinite. So I'm deleting all the things over here and I'm bringing back this thing. So
origin point by just pressing Z, enter A angle. I think these things are clear. Now we will talk about the construction line in more detail. Uh, Let me draw simple line over here. Have you heard about the angular bisector? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. What does it do? It basically divide an angle into two parts. Yes, And sir. if we draw a line over here, and it must be dividing this angle into two. Okay, so using the construction line, we can draw a bisector, BI over here. So I will just type the B, and it is asking specify the vertex point of the angle. We are basically using the construction line for the angular bisection. So what is the vertex point of these two? This one. Okay, you can say I'm unable to exactly select the uh, vertical line, center point of the vertex point of these two lines. To select a line exactly, we have an option like O snap, object snap. Where is it? It is over here. Okay. So if we turn it on, now you will see I can see the end point, I can see the start point, I can select any point on this line, midpoint, and each and every these you can see a box over here, you can see a rectangle over here. This has a meaning. It tells us this is the midpoint of this line segment. When you turn it on, these are from drafting setting. You can set it from draft GS. It's called object snap, where it is fixed. It can be activated using F3 key. You can turn it on and off, and you must have selected all the objects because these are the names and the symbols of these different types of snapping. And you know what is snapping? It is helping us in exact selection of a particular point. I will again go to construction line, press B for bisector. And what is the vertex point? This one is the vertex point. So I'm clearly, easily able to select. If I turn it off, F3 key, now you see, I'm unable to select this thing. You can see I'm still in the line command, but I'm unable to select it. If I want to select it, I will just turn on the snap and I'm able to select it. This is the midpoint. Now this is start angle and this is the end angle. You can see angular bisector has been drawn over here. If you find the angle over here, these will be similar. Sorry. Let's say I'm drawing the angle, showing the angle. You'll be able to show it once you study about the dimensions. It's 41. I'm again using it must be 41 also. And if you want to show the whole angle, it must be how much? 82 in between these two objects. This should be clear. This construction line is helping us to divide this angle into two. That's it. सर इनिशियली हमें एंगल पता होगा फिर हम उस एंगल पे लाइन बना लेंगे. G, please repeat your question. I would. इनिशियली हमें एंगल पता होगा ना, फिर जिस तरह आप कंस्ट्रक्शन लाइन में उसका हाफ एंगल पे बना लेंगे, ऐसे डिवाइड हो जाएगी. नहीं 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 माय डियर, इससे पहले हमें एंगल का पता था कि 82 है. अगर हमें वो पता है then we don't need construction line, we can just draw a line at that angle. This thing has the beauty that it is doing it itself. We are just selecting the vertex point, the start point and the end point, and then it is doing it itself. That's why we are using the construction line. सर ये कमांड रिपीट कर सकते हैं आप? थैंक यू. ठीक है, थैंक यू. We do it again. That let's say we have a line segment over here like this one, and you should keep in mind that I have drawn it randomly. I don't know the exact uh, uh, let me try it somewhere else. Line. Now you are seeing
I'm drawing just randomly. I don't know the angle included by these two lines. But now I'm using the Excel construction line. Bisector B. What it is asking me, it is not asking me what is the value of the angle. It is just asking me what is the vertex point of the angle. So as you see, this is the vertex point. Vertex point, it is asking me what is the starting point of the angle. I can select this one or this one. Let's just select this one. Then it is asking me select the next point. Specify angle end point. जो angle आपका है उसका end point select करें. I'm selecting this one. You can see the line is automatically coming. If I'm changing the angle, it will be coming to the middle. I'm just selecting this one, so it is dividing this angle into two. Is this clear now? Yes, sir. Still there any doubt? No, sir. Clear, Okay, sir. Janaab. Okay. So this was about how to bisect any angle. Okay, we will be using these things because we will be needing, need of these things. We have to bisect some angles while drawing different types of drawings. So you will see these things. So you should keep in mind that which thing I can use directly, because it will be very difficult to draw a line, then find its angle, then divide that angle, and then you define its coordinates and draw it. So why not to just do it by selecting the start point, end point, and vertex point? You will be doing it in seconds. Okay. Now there is another type of construction line which is called offset construction line. Let me draw. Achha. If you want to draw only horizontal or vertical lines, ठीक है जनाब. This is not only for the construction line, this is for the line as well. If you want to restrict your mouse to only horizontal and vertical, so in construction line we have the option of horizontal or vertical. But if you want to do it in line, let's say I'm in line command, and it is okay. It is asking me the first point. Then you can see I'm drawing. I can draw any line, angular or vertical or horizontal. If I want to restrict my mouse curve movement or my workspace into horizontal or vertical line, I will turn on the ortho mode, F8 key over here. If I turn on F8, you will see I can only draw a line at the horizontal or vertical. I cannot select. If I select two, it will drawing the horizontal line. This can also be activated in any command, whether it is line, construction line, polyline, circle. So you should keep in mind that the ortho can also be used to draw a horizontal line very easily. Horizontal or vertical, but lines at 90 degrees. I will just turn it off. F8 key, or you can turn it on from the status toolbar. It will be off. Okay? So let's go back to the construction line. If we turn it on again over here from the status toolbar, now you will see the start point, and you can see only we can only draw horizontal, and we cannot draw angular line over here now because we have restricted our movement to ortho mode. If I turn it off, the shortcut key is F8, will be off, and we can draw any line, whether it is horizontal or vertical. So let me draw a line like this one. Let me draw a horizontal line. So I will turn on the ortho. Just click over here, it will be drawn. Now, if I want to draw, is this clear? Ortho clear है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है. सर Now, ये if I want ऑर्थो to, सर ये ऑर्थो इस्तेमाल करने के लिए F8 को प्रेस रखना होगा, यानी सिर्फ एक दफा दबाने से ये नहीं, ऑन हो? you just press it once. You just press it once, it will be turned on, and when you press it again, it will be turned off. ओके सर, ओके. Like I'm doing it, turn on. It's off now. Now I'm doing it, turn on. You can see the message command के ऊपर लिखा हुआ है. ठीक है? F8, and if it is not necessary to be turned on from F8, you can do it from here as well, status toolbar.
If it is 2017, it will be like this one. If it is 2007, so it will be written Arth over there. Okay? It is symbol is over here and over there it is a name. Acha, if all these things are clear, then we will talk about another option in the construction line. You can see in the construction line, which is the last one is offset command. What does the offset mean? The offset helps us to draw similar object at a specified distance. For example, if I want to draw different lines at 10 or 2 units away from this point, let's say 2 units away, one line 2 units on this side and one line, we have selected units, let's say millimeter, so I want to draw a line 2 millimeter on this side and 2 millimeter on this side. The simplest method is to just take an offset from this line and give a value and just select this object, and where you want to draw, just click on that side. Let's see how it is doing. Offset O, it is asking me specify the offset distance. I will say okay, offset distance is 2, enter. It is asking me select a line object. Which type of, I'm selecting line object. Now it is asking me specify the side of offset. I'm just clicking on this side. Okay, again selecting this line and clicking on this side. Selecting this line, clicking on this side. On whatever side you click, it will be just select the object and then click where you want to draw the object. So you can see I am drawing the equally spaced object. This is also helping us to draw equally spaced objects, like you are doing sheet distribution in your manual drawing. So you can do the sheet distribution with the help of these construction lines by placing the views equally spaced just by selecting these lines. सर इसको जरा रिपीट कर दें, आपकी आवाज कट रही थी थोड़ी बहुत. Thank you, sir. Let me draw a construction line vertical. If I want to draw, is my voice clear now? सर Yes, आपकी sir. आवाज कट रही है थोड़ी थोड़ी. तुम्हारा इंटरनेट का इश्यू होगा मेरे ख्याल से, हमें तो क्लियर आ रही है. Kindly change your position अगर आप मोबाइल नेट यूज कर रहे हैं, because hello. जी सर आपकी आवाज आ रही है. Okay, so let's start again. This is a construction line. I have drawn a vertical one, and if I want to draw the lines at equal space, मतलब कि मैं equally spaced parallel line जिसको draw करना चाहता हूँ, whether it is vertical, horizontal, जो भी line है, but उस line को मैं parallel line draw करना चाहता हूँ एक equal space पे. So we use offset command for that inside the construction line. We have a separate offset command as well. We will talk about it in modify toolbar, which is over here. You can see it from modify. We will talk about the offset separately. What does it mean? But over here, the offset both has the same meaning, but it is only used for the construction line over here because it is inside the construction line. So I will again go to the construction line. Look over here, sorry. Excel. Then what option I'm using? Offset. I'm using O. Enter. You can select a distance or the true mean, which is inside the bracket. It means on any point where you will click, it will be drawing the offset from that option. So you will just first do it with the distance, then we will do it with the any point. So I'm changing the distance from 2 to 4. I want to draw a line at a distance of 4 from this line, but that must be parallel to this line. So it is asking me select the line. I'm selecting it. Now it is asking me on which side you want to draw. I can click on this side on any point, over here, any point. It will be drawing it at a 4 distance because I have selected a distance of 4. I'm clicking over here like this one. It is drawing it over here. I'm clicking, selecting this object, and you are seeing I'm clicking just next to this point, but still it will be drawing it away at a distance of 4. This is how we use the construction line for drawing the offset lines. And as you saw, there is another option inside the construction line, offset command. There's an option true. So what does this mean? T, I'm just using T,
and you can see I'm typing T small, not necessary to be capital. But why am I writing T? Because the thing in the capital has the thing in the brackets has a T in capital, and we have to, if we want to activate this command, we have to use it. I'm just pressing it. Now you just select the line, and anywhere you just click, this will be drawing the object parallel to this one. But that will be at a distance with the help of your mouse. The through means anywhere you want to draw. Click, it will be drawn. Not only this one, you can just draw from this one as well. You can draw from this one as well. Is this clear? How do we use the X line for drawing of different types of objects? This should be clear to all of you. So, Yes, sir. okay, so let's move on and talk about another type of line. I'm again deleting all these things, repeating my command E, enter, all, I'm typing all, enter, all the objects are selected, again enter, it is deleting everything. If I want to bring back my crosshair to initial position, I will just click Z, enter, A, enter, everything will be adjusted, bring back, everything is bring back to the initial position. Now let's talk about another type of line which is called polyline. For polyline, let's talk about array. It is similar to construction line, but it has start point is known and end point is unknown. Array. Click on this. The start point is known, the end point is unknown. It is similar to the construction line. We also use it for the construction purpose. This is the main. There's no big difference between construction line and array. But sometimes you do not want to draw lines at both points. We just need to draw line at only one point. Is this clear? So we don't need to get confused with the array and construction line. Both have the same meaning, but the construction line has both ends unknown. The array has start point known and end point is unknown. सर Now let's डिफरेंट talk about ओरिजिन के साथ ये रे कैसे बनाएंगे? अभी तो आपने एक ओरिजिन पे बनाई है, अगर वो दूसरे पे बनानी हो मतलब थोड़ा दोबारा कमांड में जाना पड़ेगा। दोबारा कमांड, लेट्स से ये स्टार्ट पॉइंट है ना, अब थ्रू पॉइंट ये है, एस्केप करें, दोबारा जाए, यहाँ से शुरू करें, यहाँ पे सॉरी यस, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ पे ड्रॉ करें, यहाँ पे ड्रॉ करें, फिर दोबारा निकल जाए कमांड से, दोबारा आ जाए कमांड में, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ तक। इट्स अप टू यू, बट यू हैव टू जस्ट गो इनसाइड द कमांड एंड गो आउटसाइड ऑफ द कमांड। इट इज अ मल्टीपल यूज, इसके लिए हमें कमांड यूज कर सकते हैं मल्टीपल। वी विल टॉक अबाउट इट आफ्टर अ व्हाइल। ठीक है, अब मैं चीजों को मिक्स नहीं करना चाहता, मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना। बट इस अगर एक कीवर्ड को, एक कमांड को मल्टीपल टाइम आप यूज करना चाहते हैं तो जस्ट राइट मल्टीपल और फिर कमांड का नेम लिख के बस जस्ट आप इंटर करते जाए, वो कमांड रिपीट होता जाएगा। नीचे मल्टीपल है, लेट्स से मल्टीपल, repeat the command or array. Now you see is not doing it. There's my mouse. Click, click, click. Start point. You can see I'm just entering. Enter. It is not coming out of the command. It is again going back to the command. Selecting 2 points, it is going back to the command. Are you getting my point? नहीं, समझ नहीं आई? यस सर, समझ आ गई सर, आ गई। So we will talk about it other commands as well. पर ये ज़हन में रखो, multiple command भी use कर सकते हैं, कोई भी command हो. You just type the multiple and repeat the name of the command. It will be doing it. You don't need to go back and come out of the command, re-enter it. You can do it. It is not that difficult. हम काम को आसान करने के लिए मल्टीपल कमांड यूज करते हैं। हम इसको एरेज वगैरह के साथ यूज करते हैं ताकि मल्टीपल चीजों को एरेज करना तो जल्दी जल्दी हम सेलेक्ट करके एरेज करते हैं, या मल्टीपल कॉपीज में हम यूज कर सकते हैं। Now let's talk about another type of line which is called polyline. As its name suggests, poly mean many, line mean line. It has many options. It has basically two main options.
What should I repeat? Hello? Who is there? Hello? Yes, sir. Who is there, please? किसको मसला है? जी जनाब. Hello. सर आप कंटिन्यू मेरे करें, ख्याल सर में कोई जुनेद मसला का वो होगा तो बता देगा। सर आप कंटिन्यू करें। नहीं, there was a question repeat, so what should I repeat? We are starting the polyline command. In polyline command, as its name suggested, we can draw two different types of things. We have basically 2D polyline and 3D polyline. Right now, we are talking about a 2D polyline. Uh, in polyline, we have options inside, and we can draw circular lines with a specified radius and line combinedly. And another advantage or another feature of the polyline is the object drawn with the polyline, whether it is straight line or combined with the circular line, it will be just a single entity. It will have bond between 2 points. Let's say I'm using polyline. Click, start point, end point, then another line point. You just saw I did this thing with the help of line as well. Let me do it again with the help of line. The upper thing that I have drawn is with line, and the lower thing which I have drawn is with polyline. Now you see the difference. If I click on the line, the object that I have drawn with the line segment, these are two different types of entities. Entity 1, entity 2. I can select it separately. But if you look at the object that I have drawn with the polyline, it is a single entity. The main difference between line and polyline. And we use polyline when we draw objects um, and we want to convert those objects into 3D solid objects. So it helps us to have a closed region. Okay? You can see there is a bond between these 2 points. There is not only common point, there is a bond between these 2 points, but there is no bond between these 2 points. You can see very clearly. Okay? So the line and polyline has these two. There are many differences, but some of them are here. Okay. So let's last सर start with polyline के लिए the please. कमांड Hello. क्या है? PL is सर the shortcut. polyline के लिए PL is the PL. shortcut. Yes, yes. I'm doing it right now. You ओके just see the PL is the shortcut key for polyline. Enter. It is again asking me to specify the start point. I can start, give any point. I will draw this rectangle just like we did over here. This one. Now you see how I can do it with the help of polyline. Again, I'm doing it the same thing, just like we did with the line, but the difference will be this will be a single entity, and that case in line it was not a single entity. It was closed region, but made of 4 single different entities. Start point 4 comma 5. Okay, at the angle, what was the length? 8.5 comma 0. At the angle, yeah, sorry, at the rate 0 comma 8.5. Enter. At the rate minus 8.5 comma 0. Enter. Sorry, I think I did wrong thing, so I just want to do it undo. Control Z, which will come back at the rate minus 8.5 comma 0, and proceed to close it. You can see I have drawn the same thing over here, but the difference is it is a single entity. When I click on this one, all the object is selected. In that case, only one segment was selected. The main difference, one difference is this one, that we can draw the uh, line directly, object as a single entity. Let's show you another feature of the polyline.
So I'm going again to the polyline. When you select the start line, and it has many options then activated. You can draw an arc along with the line, you can draw half width, you can give half width, you can give the line with the length, you can give width to this one as well. What does this mean? Let's start with the arc. The start point, end point, I have just drawn a single straight line. Now if I want to draw in continuation to this one a circular line, arc, a circular arc, so I will select the arc command. Although we have a separate command for separate arc, if you want to draw just arc, not within the polyline, we have options, we can use that, but this arc is inside the um, polyline command. So I will select A for the arc because A is in capital. Let's say I'm drawing it like this one. We will talk about how to draw an arc. We have about 13 or 12 methods to draw an arc in the CAD. I will show you this one. Now if I want to continue the arc, I will just doing it like this one. But if I want to draw a straight line, let's say I'm doing it continuing the arc, okay, but if I want to bring back it to the line, I will just press L. It is because it is over here in this class, and it is now again drawing a straight line. But now you will see this is a single entity drawn with the single polyline. Is this clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. It's a polyline edit option. I think this is not available in other CADs. It's only available in this CAD option. We'll talk about it later, how to edit a polyline, but you just need to learn how to draw a polyline. Okay? Achha. Now you saw this object is drawn, the line thickness is similar. Width, we normally call it width. Always keep in mind that anything that you draw over here is drawn in the top view of the CAD. As the CAD has different types of views over here, you can see. If the view toolbar is not over here, you can see over here. For example, I'm drawing a circle over here. Circle. You can see we are only able to see the circle. But if I change the view from the top to front, let's say, you will be able to only see a line. ठीक है? तो ये ध्यान में रखिए कि जब CAD ड्रा कर रहा होता है वो टॉप में ड्रा कर रहा होता है. Although 2D में हम व्यू को इतना वैल्यू नहीं देते, we just need a plane. But when we talk about 3D views, so in that case, we need to understand what is the top view, what is the side view. जब हम 3D मॉडल्स ड्रा करते हैं तो उसमें हम व्यू को ज़्यादा तवज्जो देते हैं. बट यहाँ पे जो भी चीज़ ड्रा हो रही थी, that is drawn in the 2D and 2D में जो भी चीज़ है वो that is drawn in the top view by default. You can change its view. Yeah. So we will talk about the polyline. In polyline, we have many options like polyline. I'm starting from the start point. Now, you can see I can select the next point. Let me select the next point like this one, next to this one. Okay. Now you can see I have different options inside. Arc, I will just use the arc command. We have some other options like length. Let's talk about length. Specify the length. Let's say I'm specifying the length of 3, and a direction is defined by its arrow. Okay. Let's say I'm drawing at this direction, so I will just type the length value L for the length and enter the value. It's a 4. Okay. Why it's not doing it in that direction? Okay. Length. By the length of the line. Let's do it 3. Okay, it's doing in that direction. You have to put angle to that. It will be doing it in the other direction. If you want to change the width of the line, what does it mean? The width mean length. Okay. When you specify a direction on the mouse, let's say I'm selecting this direction, then you can give the value in that direction. अब 5 दे दो, उस direction में वो extend करता जाएगा. Let's say मैं 5 दे दो, it will be extending in that direction. ठीक हो गया? Now, if you want to change the width, what does the width mean in CAD? We normally call it thickness, but it is in CAD we call it width. What does width mean? Let's say you are drawing this line
you are drawing this line with the normal pen, and then you are drawing this line with the marker. So the width of the line will be different or the same? I'm asking you people. Different, sir. Different. Different. The width of the line will be greater when it is drawn with the marker as is, because the tip of the marker is, diameter of the tip of the marker is greater than that of the pin, normal pin. So the width means that this width of the line, we normally call it thickness. Okay? Uh, there are two methods to change the thickness of the any line. Okay? When we say objects, any object, okay? हमने बात की थी कि सारे ऑब्जेक्ट्स जो है, हमने बात की थी कि each and every object is drawn with the help of line, चाहे straight line है, circular है, but these are lines. तो हम इस लाइन की थिकनेस को दो तरीकों से चेंज कर सकते हैं. The one is we can change its thickness or width uniformly. वो हम प्रॉपर्टीज टूल बार से कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज से कर सकते हैं. अगर आप प्रॉपर्टीज टूल बार पे आ जाएं, यहाँ पे it has a different types of lines, color, it has a different types of lines. We will talk about it after a while. And if it has different types of width of the lines. Okay, and this is another one. Okay, it's not activated right now. I don't know what is this. Okay, what does it mean by color and by layer? We will talk about layers, and then you will be able to see. We will also talk about blocks, and you will be able to understand what is these means. But if you want to say, let's say width of this line, you just select any width. Let's say 1 millimeter. A line width is not visible because we have turned off the line width from here. Okay? To activate that, I will just go to this customization and I will turn on the line width. This is the line width. I will just select this one. It is turned on now. When you draw a line with the thickness, you can see by default the thickness is 0. Practically, we cannot draw a line with 0 thickness. But in CAD, we can change the line. We call it line width as well. LW is a shortcut here, I think. Yes, you can select the line width directly from here. You can select anyone in inches, in millimeters, and so on. You can adjust the scale, etc. You can also select it from here. You can change it from here as well. Double click on the line. It's not doing it. Let's do it. Okay, it is giving me a value over here. It must have turned on a window. Why it's not doing it? Okay, it's not doing it like this one. It is just CAD 17 is giving the option. If I want to change the width, I can change that. I can change the lifetime. I can change anything. Anyway, we will talk about fets and vortices, etc. But I can change the line. But if you want to change again its width, just click on this. Okay? Please, I'm telling you how to change properties of an object. Why it's not doing anything. Click on this. Come out of the command. Select the object and just go to the properties toolbar. Properties toolbar and select the line thickness. Whatever thickness you want to give. If you want to bring it back, to just select by layer or 0 thickness. Or just select by layer. We will talk about layers, then you will be able to see. But when you want to see the thickness, if you give some thickness like this one, and you want to see it, you must turn on the line width. Okay, so it is helping us when you give some thickness, and we use this type of techniques in drawings. We give some thickness to different thickness to the construction line, different thickness to the dimension line, different thickness to the hidden lines, and so on. So we just use different types of thicknesses in the drawing. So that's why we call it different types of thicknesses. If you want to change the color of this line, any line, not this one only. If I draw a circle, this is also a line, but a circular line. If you want to change this, its
color, so you can change it from the here. Any color you can give it, it will be changed to that color. It's changing the color of the object that you have drawn. These are changing properties of the object. You can select any color from here. Then you have different options like index colors, true colors. Okay, you have color box and you can select any color from here if you want to use. When you want to bring back it to the black, you just select black or you just select क्या नाम है? Sorry, white. By layer it's white. What does layer mean? We will talk about layer and you will be able to see again. I'm telling you again and again, the layers are something that is helping us in drawings. We will talk about it in the next class, inshallah. We were talking about in polyline, and in polyline we were talking about the width of the line. So we can change the width by two methods. Uh, Simple by from property toolbar, but you saw that when we selected, we were changing the line thickness for the whole line. It was uniform. But we were selecting 2 millimeter, 1 millimeter, 3 millimeter, and that was uniform white line width. You saw just. I'm doing it again. I'm turning on the line width and I'm just changing the line width to 6. You can see this line, if you only touch only this line segment, so the line has a uniform width or uniform width, both, you can say both. What if we need to draw a line segment with different non-uniform width? If I want to draw a line like this one, if I need to draw a line like this one, it's a line. It's not an object, other object. It's not what you say, a two-dimensional. It's a single unidimensional line, but it's drawn with non-uniform width. The width of the end is greater than the width of the start. If we need to do this thing, we can only do it in the line command, polyline command. So I will start again from the polyline start point. I can do it by two methods, width or half width. I will first do it with width, W. It is asking me start width, let's say it is 0, and end width is, let's say it is 0.5. It will be drawing the line segment with the 0 width and the 0.5 width at the end. But when you go to the next line segment, it is taking the recent latest value as an input and considering it for both start and end. Now look at this line segment has a start and end value of 0.5. If you want to change it, again go to W, change it to, let's say it is 0.5, and bring the last one to 0. When you draw it, it will be drawn like this one. Now you can see this is a line drawn. That's an object. So that of क्या नाम है इसको? It's not a circular object or sorry, it's not the 2D object. It is just drawn with the line command. Are you people with me? Yes, sir. Okay. समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. आ रहा है सर समझ। Let's so you can see we can give non-uniform length a line just inside the polyline. This option is only available in the polyline. Okay. So we can do it by two methods. Start point. Okay. One is width, the other is half width. Both are doing the same thing, but the width, in width you give the full width of the line, and in the half width we give half width. Let's say I want to start the line with a 0.5. Let's say I want to start a line width of 1. So what will be the value? If I'm using width, I will be entering 1. But if I'm using half width, I'll be giving the value 0.5. That's it. There's no other difference. Half starting end, okay, 0 है. Next में देखे 0.5 देता हूँ, but it will be taking it 1 because we are defining 1 half value of the width.
समझ आ रही है? हमारा एंड रिजल्ट 1 होगा क्योंकि हम हाफ पे डिफाइन कर रहे हैं. If I go again to the half width, it is again asking me to point. If it changes to 1, just look at to the starting point. End point पे मैं क्या करता हूँ? Again 0.5 करता हूँ. It is double to this one. Is this clear? क्या नहीं? Yes, sir, clear. Clear, sir. ठीक है जनाब. So these are the options available inside the polyline. I think we have covered all the options inside the polyline. So we use line, polyline, construction line for drawing different types of objects. We will do an exercise after a while, but let's try to cover some more commands. Then I will give you some time. I will give you a task and you have to do that task. Okay, sir. You might have heard about polygons. Yes, sir. And we draw different types of polygons. I think and I hope you might have used a method like how to draw a polygon inscribed in a circle, and you were using some construction techniques like you were drawing the width of the polygon, then you were drawing a perpendicular to that, then an arc and dividing that arc, a straight line, and then you are writing 1 2 3 4 5. If you remember, I hope you have done this in the theory portion. And you are drawing a circle, and inside the circle you are drawing a polygon. याद होगा भाई, याद है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. In CAD, Yes, sir, याद है, बिल्कुल याद है. ठीक है. In CAD we can draw polygons very easily. For the polygon we have the shortcut key POL. POL is the shortcut key. POL. You can write PL is for the line and POL is a for polygon. You can activate it from the draw toolbar, polygon, or you can activate it from the command from which the pentagon shape over here. It's a polygon. To draw a polygon, we have two methods: inscribed in a circle and circumscribed about a circle. And you will see that when you inscribe inside the circle, the size will be different, and when you circumscribe about the circle, the size will be different from that. In CAD, we have two main methods to draw a polygon. Either we can draw it just by knowing the side length, or we can draw it by knowing the center point and the radius of the circle, inside which or about which we are drawing the polygon. Let me draw a circle over here, then we will be able to do it. Circle, it is drawing at, let's say, 5,5, and it said this is, let's say, 10. I have drawn a circle over here at a center of 5,5, and it said this is 10. This is not necessary for the polygon, but I am just doing it for your understanding. ठीक है, आप इस चीज को समझिए. Sorry, I'm selecting the polygon over here. It is asking me enter the number of sides. By default, it is taking 4. You can change the number of sides. Let's say I want to do a heptagon. How many sides it must have? 7. I'm pressing enter 7. Enter. Now it is asking me to specify center of the polygon. I told you there are two methods. Either we will know the side length and we will do drawing it, or just like we do in the manual method. But in CAD, we can do it if we know the circle about which or inside which we are drawing the polygon. In this case, we will not need to know the edge length. So I'm using the option first, then I will talk about the edge length. So I have drawn a circle for you people. It is not necessary to be drawn, but just आपको समझाने के लिए. And I want to draw inside the circle, inscribed in a circle, a polygon. So
it is asking me center of the circle. I will give that value which I have given for the circle, 5,5. Now it is asking me which type of polygon do you want to draw, inscribe in a circle or circumscribe about a circle. I will do the same. I will write the same polygon by two methods, and you will both methods, and you will see the difference. So right now, I'm pressing enter. When I press enter, which type of option it will accept? Kindly everybody answer me. Inscribe in circle. फर्स्ट वाली जो है Why it will inscribed select this thing? It's a card, sir. Why? yeah Sir, because I is written there. I is written there in angular brackets, and it tells us that this is the by default value it is taking. Me? Okay, so let's press enter, and it is asking. You can see it has selected the center of the circle because I have selected both centers equal. What is the radius of the circle? Let me give it again 10 because I want to show it inside this circle. You can see we do not know the edge length of this polygon, which is heptagon basically, but we know the center point and the method of this polygon. We can draw it in CAD. Let me do it again by changing the type. Okay, number of सर ये G. सर ये सेंटर वाली रिपीट कर, सेंटर कैसे सेलेक्ट हुई ये हेप्टागन के लिए सेंटर? जो सर्कल का सेंटर था मैंने 5,5 दिया था, वही मैंने हेप्टागन के लिए दिया है 5,5. देखिए हेप्टागन के लिए वी आर सेलेक्टिंग अ वर्चुअल सर्कल. यहाँ पे तो मैं ड्रॉ किया हुआ है आपको समझाने के लिए. हेप्टागन के लिए हम या किसी भी पॉलीगॉन के लिए वी आर सेलेक्टिंग अ वर्चुअल सर्कल व्हिच इज नॉट एग्जिस्टिंग ओवर हियर, बट वी आर जस्ट टेकिंग हेल्प फ्रॉम द सर्कल टू ड्रॉ हेप्टागन. समझ आ रही है? ठीक है सर, ठीक. Just yes. follow this. I'm doing the same thing, but just changing the type. Just follow me, and you will get clear your answer. Your question. So enter number of slides. Sides, sorry, it is 7. I'm again pressing enter. It is accepting the 7 value. It is asking me center of the polygon. Look at over here. Center of polygon. So I'm giving 5,5. Why? Because I have given the 5,5 to this one. It is by default accepting it. And before the polygon which is drawn over here is drawn with the inscribed in a circle. Now I'm changing the method from inscribe to circumscribe. So I'm pressing C, enter. And it is asking me specify the radius. I will again use the radius 10 because I have done it for the other one as well. Now you see the difference. I did not change anything in the dimensions. I just changed the method from inscribe to circumscribe, and you can see both are drawn, but one is inside the circle, the other is outside the circle. So sometimes we need to draw these things. We will be having a circle, and we are circumscribing. We need to circumscribe a polygon around it, about it, outside of it, or we need to draw a in circle in a polygon inscribe inside. And this is the useful method used for drawing the nut heads or the bolt heads, nut and bolt drawings that we use in mechanical engineering. We will try to draw some nut and bolts views. But like इसमें use होता है. We will be having a pitch circle and we will be drawing it around that. ठीक हो गया जनाब क्या नहीं? Yes sir, ठीक. अच्छा, let me delete this circle. अच्छा, let me delete this circle. It is not necessary to be there. I'm again doing the polygon command. Polygon, number of sides I'm changing to 8. It is asking me center. I can give any value 1,1. Or even I can select a value on the screen. It is not necessary to be given from the center. अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इसका क्या ऑर्डर पेयर होगा? हमें नीचे नजर आ रहा है बिल्कुल 8,5, 8,6 एंड 8,9 होगा. हमें क्रॉसहेयर का वैल्यू पता चल रहा है.
अबाउट 8,8 है, ठीक है, एंटर करें और यहाँ से आप उसके जो है रेडियस को यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हो या उसको डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो, वैल्यू भी जैसे इट्स अप टू यू। दिस वाज about the rectangle to be drawn without knowing its edge length. But if you know the edge length and you want to draw the rectangle, you can do it very easily. Again, polyline, number of sides you have to define. I am drawing a pentagon, and it is asking me, do you want to give the center of the circle or you know the edge of the, now you have option inside, edge, E-D-G-E, edge, E. Enter करें. First point of the edge, let's say I have to draw, I have to select a length of say 10 units, so or 2 units, let's say. So this will be my start point. Any point, if you know the start point, and but you just need to define a line. So उसके लिए start point, end point चाहिए. या तो माउस से करता हूँ, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो उसके मुताबिक इसका शेप जो है चेंज भी होता है और बड़ा भी होता है, ठीक है. और इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, पॉलीगॉन, पेंटागन है, एज है, स्टार्ट पॉइंट है, और इसको मैं वैल्यू देता हूँ @3,0. क्या कर रहा है, इसको 3 मिल रहा है क्योंकि यहाँ से मैंने स्टार्ट लिए और मैंने 3,0, जो इसको एक एज का लेंथ है वो 3 है. Sorry, if you want to show the dimensions like this one, so it is 3 units. It is 3 units. Is this clear? क्या नहीं? Yes sir. यस सर. तो ये देखिए यहाँ पे हम बहुत आसानी से रेक्टेंगल को, सॉरी, उसको ड्रॉ कर सकते हैं अपने पॉलीगॉन को भी शेप हो, ठीक है. सो पॉलीगॉन में लेट्स से 100 साइड्स हो, 200 साइड्स हो, 50 साइड्स हो, 30 साइड्स हो, you just need to select sides, length, number of sides and you will be just drawing it directly. सर ये डायमेंशन के लिए कमांड DIM लगाएंगे? वो भी कर सकते हैं और इसके लिए आप डायमेंशन टूल बार से भी कर सकते हो. मैं एंड में डायमेंशन के 1-2 कमांड आपको सिखा दूंगा, वो फिर हमारा नेक्स्ट क्लास का काम होगा, लेकिन 1-2 मैं आपको इस क्लास में सिखा दूंगा जिससे हम डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं. आप यहाँ से डायमेंशंस में लीनियर अलाइन यूज कर सकते हो और रेडियस का भी दे सकते हो, जैसे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, ठीक है. ये मैं आपको बता दूंगा आफ्टर अ व्हाइल एंड ऑफ दिस क्लास. और अगर आप यहाँ से नहीं टूल बार से, तो यू मस्ट हैव द डायमेंशन टूल बार, उधर से आप सेलेक्ट कर सकते हो. अगर आप की से करना चाहते हो तो फिर हर एक के लिए डिम अलाइन, डिम एंगुलर, डिम एंगुलर, डिम रेडियस, डिम डाया, इस तरह के कुछ कमांड आपको एंटर करने पड़ेंगे, फिर वो काम हो जाएगा. लेट्स से डिम अलाइन, ये अलाइन डायमेंशन सेलेक्ट करेगा. डिम डाया, ये डायमीटर सेलेक्ट करेगा. डिम रेडियस, ये रेडियस सेलेक्ट करेगा, ठीक है. तो डिम पहले डाल के फिर उसके 3 डिजिट पहले डाल के उसको फर्स्ट 3 डिजिट डाल के वो आ जाएगा. ओके सर, ओके. Let's talk about another command. Just leave the rectangle. उसके बाद हम आते हैं आर्क और सर्कल पे. ये थोड़े से ये फिर रेक्टेंगल की तरफ आते हैं, ठीक है. रेक्टेंगल हमारा रहते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं. आर्क आर्क से पहले सर्कल की बात करते हैं. व्हाट इज अ सर्कल, ठीक है. सर्कल को ड्रॉ करने के लिए we need at least 2 things, very minimum things. Center point, radius, or we need at least 2 points to define a circle, minimum requirement. मतलब center point, end point known होगा तो हम ड्रॉ कर सकेंगे. डायमीटर known होगा, we can draw. तो डायमीटर भी हम लाइन से डिफाइन करते हैं, 2 points, ठीक है ना, क्या नहीं? ऐसा करते हैं ना हम? यस सर. सर्कल को ड्रॉ कर we use the shortcut key for the circle is C, and if you want to activate it from the draw toolbar, you can select it from this icon. Select the center point and give it any radius. If you want to do it on the mouse keyboard, C circle, sorry, C circle, C circle. And it has many options. We will just draw single circle, then we'll talk about the options.
circle. Let's say this is the start point, 2 comma 2 is the start point, sorry, and give it a value, either diameter or radius. Let's say I'm going give a radius of 2, it will write like this. I'm again using the circle command. Let's say this is my 10 comma 10 is the center point, and I'm now I'm doing diameter instead of radius, so I will press D and give a value of 5, let's say. So it will be drawing this. It's a very simple method to draw a circle. Okay, now there's another method to draw a circle. If you know 2 points, let me show it from here. Circle. We have center radius method, we have center diameter method, we have 2 points, we have 3 points, we have tangent radius, and we have tangent radius. These are the options available for drawing the circle. Radius and diameter तो हमने अभी कर दिया है. Now let's talk about the other options. 2 points. Let's say this is the start point, this is the end point. So you are seeing we are just defining the diameter. नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने start point, let's say मैं एक line segment draw करता हूँ. Okay? और ये डायमीटर है सर्कल का, तो मैं क्या करता हूँ, सर्कल उसमें 2 पॉइंट्स, देखिए 2p, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट में डिफाइन करता हूँ, ऑटोमेटिकली ड्रा हो जाते हैं. तो वी आर बेसिकली डिफाइनिंग द डायमीटर. अगर मैं इसको लाइन सेगमेंट के बगैर भी कर सकता हूँ, 2p into start end point. If you know 3 points, we can define a circle. Again, 3p, first point, second point, and third point. Anywhere you define a point, its diameter will be defined automatically. Circle, 3p, first point, second point, circle, 3p, first point, but it's not doing this, circle, 3p, point, second point, and third point. ठीक है. बाद जब हमारे पास 3 पॉइंट्स होते हैं, उनके बीच में हमने सर्कल को ड्रॉ करना होता है, तो व्हाट वी डू, वी जस्ट सेलेक्ट दिस मेथड. ठीक है. There's another method. Let's say हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, and let's say a circle है, and we need to draw a circle in between these two objects. ठीक है. और बट उसकी प्रॉपर्टी ये होने चाहिए कि दैट सर्कल मस्ट बी टेंजेंट टू दीज टू ऑब्जेक्ट्स, एंड यू नो व्हाट इज टेंजेंट, इट मस्ट बी क्रॉसिंग दिस ऑब्जेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज नोन. But you should keep in mind that we can only draw this circle once we know we have the radius greater than the end between distance between these two. The end between distance among these objects or between the two objects. अगर हमें इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस, जाहिर बात है, if we define a circle with a diameter less than the distance between these two, it will be not be able to draw. वो एनुलेट देगा. ठीक है. So let's do it tangent radius. मैं दोबारा सर्कल में जाता हूँ. It is tangent radius. So T में इंटर करता हूँ. It is asked me select first object of tangent, second object of tangent. Now it is asked me define the radius, and it is giving me the by default value 2.2. मतलब ये कह रहे हैं कि इसके बीच में डिस्टेंस जो है वो 2.2 रेडियस से कम नहीं होना चाहिए. अगर मैं 3 देता हूँ, लेट्स से, it will do it. इसको जिस पॉइंट पे टेंजेंट आएगा ये ड्रॉ करेगा, इसको जिस पॉइंट पे टेंजेंट आएगा ये ड्रॉ करेगा. ठीक है. लेट मी डू इट अगेन. सर्कल टेंजेंट, इस ऑब्जेक्ट को टेंजेंट होना चाहिए, मैं जिस पॉइंट पे भी चले इसको ऑब्जेक्ट को टेंजेंट होगा. अब देखिए मैंने 3 दिया था, मैं 2.5 देता हूँ. यू सी सर्कल चेंज हो रहा है, उसका डायमीटर जब मैं ज्यादा वैल्यू दूंगा ये बाहर जाने की कोशिश करके, जब मैं अंदर आने की कोशिश करूँ तो कम से कम वैल्यू दूंगा, बट नॉट लेस देन 2.2 जो मुझे शो हो रहा है उधर. क्यों? तो यहाँ पे देखिए सर्कल टेंजेंट, मैं यहाँ पे 2 वैल्यू देता हूँ, दिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ. अब मैं वैल्यू देता हूँ 2. ये कह रहे इट्स एबल टू डू इट. ठीक है.
let me give another value. Sorry, tangent this object, and let's say value of 1. It is unable. The circle does not exist. ये वैल्यू 1 की जो मैंने दी वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उनसे कम है, इसलिए ये नहीं कर रहा. गेटिंग माय पॉइंट. तो ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि बाद जब हम कोशिश करते हैं कि वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स एंड वी वांट टू ड्रॉ अ सर्कल एट अ सर्टेन रेडियस, but that circle must be tangent to both objects and we are unable to do it, and the reason will be that it is invalid because this distance must be greater than the value you are given must be reasonable. ठीक हो गया जनाब के नहीं? Yes, sir. अच्छा, now let's talk about another circle type, tangent, tangent, tangent. In this case we are unable to define the diameter. We are only defining the 3 points and 3 objects, and a circle will, if possible, will be drawn tangent to all those objects. Let's say this object, and this object. It is drawn. अगर मैं extend करूंगा, let's say xt, ठीक है, extend object, ठीक है, ठीक है. You can see मैं इस लाइन को extend कर रहा हूँ. This circle which is drawn over here is tangent to all these objects. है कि नहीं है? लेट्स से मैं यहाँ ऑब्जेक्ट पे दूसरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, सेपरेट वन, ठीक है, और सर्कल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे. नाउ आई वांट टू ड्रॉ अ सर्कल जो कि इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट को टेंजेंट हो, लाइन को. तो 12 में जाता हूँ, ड्रॉ सर्कल 10 10 10, इस ऑब्जेक्ट को टेंजेंट हो, इस ऑब्जेक्ट को टेंजेंट और इस ऑब्जेक्ट को. ये खुद को एडजस्ट करेगा, ठीक है. तो इस केस में हम डायमीटर नहीं देंगे और रेडियस, इट विल ऑटोमेटिकली एडजस्टिंग इटसेल्फ इन अमंग ऑल द पॉइंट्स and it will be tangent to all the objects. Is this clear? Yes, and sir. you need these things while drawing the सर ये different लास्ट में रिपीट कर सकते हैं आप, ये जो आपने टेंजेंट बनाया था रेक्टेंगल और लाइन के, ये टेंजेंट 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 रिपीट कर दें. Okay, let's say I have this rectangular object, any object. Let's say जरूरी नहीं कि rectangular, polygon भी हो सकता है, ठीक है. ये सेंटर हो गया और ये लेट्स से स्क्राइब हो गया और ये एक पॉलीगॉन जो मैं रैंडम से ड्रॉ कर रहा हूँ. लेट्स से एक रैंडम पॉलीगॉन है और फिर एक सर्कल कमांड ड्रॉ करता हूँ. तो ये कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट अगर आपको समझाने के लिए कल इसको टेंजेंट होगा, यहाँ पे इसको मैं एक्सटेंड करूंगा, इसको टेंजेंट होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट या नहीं? हेलो, यस सर. Yes, sir. यस सर. समझ आ रही है कि नहीं? यस सर, आ रही है. ठीक है. तो इस तरह हम इसको टेंजेंट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. Similar to the tangent, अगर circle clear है, we can move on forward and we can talk about the another command which is arc. Okay, let's talk about the another command which is called arc. Arc is circular arc. अगर आप draw में आ जाए, ठीक, और यहाँ पे methods देखे, so there are about, you can count it, how many methods are here? 3 3 9 11 methods are here to draw an arc, है ना? And you can see there is no difference among all these. Just you just need to know at least 3 points for a circle. मतलब है कि you know start, center, end, start, center, angle, start, center, length. Then you just change it.
start end angle, start end direction, start end radius. Then start center end, start center angle, start center, sorry, center start. You're just changing the sequence of the points that you know. That's it. Okay, let's write with the start center end. So I'm using 3 points. The first one, first point, second point, and third point. Any point over here, it is fine. Okay. Uh, another method is the shortcut key for arc is A. Press enter. ठीक है, इस पे फिर ऑप्शंस वन बाय वन एक्टिवेट होते जाते हैं. मतलब स्टार्ट, आप स्टार्ट पॉइंट से शुरू करना चाहते हो आर सेंटर से, मैं स्टार्ट पॉइंट से करना चाहता हूँ. ओके, दिस इज माय स्टार्ट पॉइंट. फिर मुझसे पूछ रहे हैं कि आप नेक्स्ट पॉइंट डिफाइन करना चाहते हो या सेंटर पॉइंट. मैं अगर सेंटर पॉइंट डिफाइन करना चाहता हूँ तो सेंटर पॉइंट पे आ जाता हूँ. फिर मुझे कह रहे हैं कि भाई आप सॉरी सेंटर पॉइंट डिफाइन करो. ये हो गया. अब मुझसे पूछ रहे हैं कि आप एंगल पे आना चाहते हो, कार्ड लेंथ पे आना चाहते हो या किसी डायरेक्शन पे आना चाहते हो. ठीक है, होल्ड कंट्रोल टू स्विच डायरेक्शन. ठीक है, अगर इसकी जगह मैं क्या करूँ, कंट्रोल को होल्ड करूँ, इस तरह आ सकता है डायरेक्शन. ठीक है, पहले इस तरफ है, लेकिन अगर मैं चेंज करूँ इस तरफ आ जाता है, इस तरफ आ जाता है. ठीक है, सो यू कंट्रोल के साथ आप इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. एंड यू कैन सी आई कैन गिव इट एनी वैल्यू. मतलब ये इंक्लूड एंगल है ना, यहाँ पे इस स्टार्ट से लेकर यहाँ तक इंक्लूड एंगल. अगर मैं 90 दे दूँ, एंगल में जाऊँ ए और 90 वैल्यू दे दूँ, ये जो एंगल है इसके बीच में ये 90 होगा. यू विल सी ये चीज है भाई, सिर्फ यहाँ पे उसको सिंप्लीफाई किया हुआ है. स्टार्ट सेंटर एंड, दिस इज द स्टार्ट पॉइंट, दिस इज द सेंटर पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट. ठीक है, फिर क्या है भाई, आर्क में स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और एंगल आप डिफाइन करें. जिस तरह मैंने 90 कर, मैं करता हूँ 180. इट विल राइट अगेन सर्कल आर्क. स्टार्ट सर्कल लेंथ, कार्ड लेंथ की बात हो रही है. स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और कार्ड लेंथ आप कितना देना चाहते हो. लेट्स से मैं देता हूँ 5. इट विल राइट. ये कार्ड लेंथ 5 हो गई यहाँ से यहाँ. गेटिंग पॉइंट के नहीं समझ नहीं आ रही. आ रही है समझ सर. अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करूँ और उसके डायमेंशन शो करूँ, इट मस्ट बी 5, क्योंकि मैंने आर्क लेंथ 5 डिफाइन. यू कैन सी व्हाट है. ठीक है, तो आप खुद इसके साथ अकेले डिफरेंट तरीकों से ड्रॉ करें आर्क को. और ये अगेन हमें उस टाइम पे यूज करनी पड़ती है जब हमें ऑप्शंस, क्या नाम है, जब हमें ऑब्जेक्ट गिवन होगा. मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको दूंगा, उसमें आप डिफाइन करेंगे कि विच टाइप ऑफ सर्कल इज गिवन, नाउ विच टाइप ऑफ मेथड आई कैन यूज. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कंटिन्यूस आर्क इज अ सिंपल वन. आप किसी आर्क को ड्रॉ करें, उसको कंटिन्यू करना चाहें. जैसे मैं इसको इन सबको डिलीट करता हूँ. ठीक है, एंटर ऑल, एंटर एंटर. मैं दोबारा आ जाता हूँ आर्क में. कंटिन्यूस पहले आर्क ड्रा करता हूँ, फिर कंटिन्यूस एक्टिवेटेड होगा. ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे, यहाँ पे सॉरी, और यहाँ पे एक आर्क हो गया. अब मैं दोबारा जाता हूँ आर्क कमांड में, यहाँ सॉरी, और कंटिन्यूस आर्क सेलेक्ट करता हूँ. यू कैन सी कंटिन्यूस दोबारा आ जाए. ठीक है, और यहाँ से सेलेक्ट करें, उसको कंटिन्यू करता है ये कंटिन्यूस आर्क. सॉरी, यहाँ से ठीक हो गया, उसी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू कर रहा है. ये अलग से, ये अलग से. इज दिस क्लियर कि नहीं? हाउ डू वी ड्रॉ एन आर्क? यस सर. इन ड्रॉ टूल बार में, जी प्लीज सर, ये जो हमने आर्क कंटिन्यूस ड्रॉ किया है, तो इसको एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करेगा या अलग अलग होंगे? अलग अलग होगा मीडिया. यहाँ पे देख ले, दिस वाज सेपरेट. वो एक एक वाला ऑप्शन जो है वो दैट इज ओनली अवेलेबल इन, क्या नाम है उसमें, पॉली लाइन. ठीक, ओके सर, ठीक. here is another object, very useful object used in CAD, is called donut. You might have eaten the donut. Kenny का है.
क्या है आप लोगों ने कभी डोनट? यस सर, खाया हुआ है। यस सर खाइए। ठीक है, स्क्रीम जो होता है, आई डोंट नो द नेम ऑफ द, यस सर, वही नाम है बस। ठीक है। तो मतलब कंपनी का नाम मुझे नहीं आती कौन सी कंपनी का, लेकिन डोनट है। आइसक्रीम में भी होते हैं और बेकरी में भी होता है। अब अगर इसके देखिए, इट्स जस्ट मेड ऑफ टू सर्कल्स। इनसाइड सर्कल का डायमीटर लेट से मैं 1 देता हूँ, आउटसाइड डायमीटर का डाया मैं 2 देता हूँ। ठीक है, और सेंटर में यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सॉरी, donut inside diameter of the donut is 1, outside diameter of the donut is 3. Let's you will see, अगर दोनों का डायमीटर सेम होगा तो एक ही सर्कल ड्रा होगा ना, दैट विल बी डोनट बट इट विल बी लुकिंग लाइक अ सर्कल। ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस So सर, you ऐसे can ही see होगा। this is सेम just होगा। a circle, but we call it a filled circle. You can see half filled circle, ring type है ना, और ये डोनट है। इसका एक और थर्ड जो 3D में होता है उसको हम टोरस कहते हैं, वो ट्यूब टाइप होता है। वी विल टॉक अबाउट इट, वी आल्सो यूज टू ड्रॉ दिस थिंग्स। ठीक है, डोनट का ये काम है, हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। हम इनर सर्कल फाइंड करते हैं, मतलब ये सिंपल सी बात है। इफ यू नो द डायमीटर्स आर द रेडियस, लेट्स से ये रेडियस 5 है और ये रेडियस 10 है, तो इन बिटवीन डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना कि नहीं? रेडियस है ना, मतलब इनर रेडियस 5 है, आउटर यस रेडियस सर। 10 है, तो क्या 5 माइनस करके आपको 5 मिल जाएगा ना? यस अगर सर। डायमीटर होगा तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये चीज हमें नोन होगी और या हमें फाइंड करनी होगी, फिर हम इसको ड्रॉ कर सकेंगे। सिमिलरली in draw toolbar we have another type of क्या नाम है, स्प्लाइन की तरफ नहीं, स्प्लाइन को छोड़े फिलहाल, आर्क हो गया, एलिप्स की तरफ आते हैं, ये बाद में पढ़ते हैं। फिक्स पॉइंट एंड कंट्रोल वर्टिसेस। एलिप्स इज सिमिलर टू द सर्कल। इसमें ये होता है कि द रेडियस इज नॉन यूनिफॉर्म। ऐसा होता है कि नहीं होता? यस सर। होता है सर। सर्कल, सर्कुलर आर्क या सर्कल का रेडियस यूनिफॉर्म होता है, जबकि एलिप्स का एलिप्स या एलिप्टिकल आर्क का सर्कल रेडियस है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। अगर आप मैनुअल ड्राइंग्स को देखें, अगर मैनुअली आप एलिप्स को ड्रॉ करना चाहते हो, व्हाट डू यू नीड? द मेजर एक्सिस एंड द माइनर एक्सिस, ऐसा है ना? यस सर। ठीक है, over here we can also define an ellipse by minor axis and major axis. So I will just, the shortcut key is EL for the ellipse। ठीक है, आप यहां से भी एक्टिवेट कर सकते हो एलिप्स, और आप यहां से भी एक्टिवेट कर सकते हो ड्रॉ टूलबार से एलिप्स। इसमें फिर दो है, आर्क और एलिप्स। देखिए, if I know the center point and end point of the axis, basically I am defining one axis। अब इसमें मेजर माइनर एक्सिस हम डिफाइन करते हैं, मतलब ये मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाला, यहाँ इस तरह ये रेडियस है ना, सेंटर से एंड पॉइंट तक जा रहा हूँ, तो ये हाफ हो जाएगा ना, सेंटर से जा रहा है। अब देखिए, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वो हम डिफाइन करते हैं, इसके बराबर हो तो वो सर्कल हो जाएगा, ऐसा है ना। अगर इससे कम होगा तो ये हम हॉरिजॉन्टल एलिप्सिस को कह सकते हैं। अगर इसको मैं बड़ा कर दूं तो ये मेजर एक्सिस हो जाएगा, फिर इस तरह का एलिप्स हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं भाई? वेरी सिंपल है। यस यस सर। सर। सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया और फिर हमने एक एक्सिस यहाँ से यहाँ तक डिफाइन किए। फिर नेक्स्ट एक्सिस हमें डिफाइन करता है कि ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, मेजर एक्सिस कौन सा है, समझ आ रही है? सर्कल है, एलिप्स है। अगर मैं इसको एग्जैक्टली इसके बराबर ड्रा करूंगा, जाहिर बात है ये क्या हो जाएगा? सर्कल हो जाएगा ना, यस सर। यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर आप नॉन यूनिफॉर्म करना चाहते हो, इस तरह ये हो गया। दोबारा एलिप्स, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। अब ये हम एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं, फिर रोटेशन डिफाइन कर रहे हैं। दोबारा यहाँ पे आए,
ellipse arc, sorry, ellipse circle। दैट वाज सेंटर। अगर मैं एक्सिस से करना चाहूँ, एक्सिस के स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट हो जाए एक, तो दूसरी का भी स्टार्ट एंड पॉइंट डिफाइन कर लूंगा ना, ऐसा है ना। अगर मैं रोटेशन पे आ जाऊँ, रो आर रोटेशन, और मैं इसको दे दूं लेट से मेजर एक्सिस को रोटेशन दे दो 30 डिग्री, ये 30 डिग्री पे मेजर एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं। मतलब सर्कल को जब आप रोटेट करते हो ना, वो क्या नजर आता है, एलिप्स नजर आता है ना। तो ये वो रोटेशन है जो वैल्यू अभी हमने दी है ना, ये उसको 30 डिग्री पे करता है। लेट्स से मैं क्या करता हूँ अगेन, ये एलिप्स, मैं क्या नाम है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट ये देता हूँ। अब देखिए ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मैं वैल्यू दे रहा हूँ, बट एक्चुअली अगर आप इसको देख ले, ये मेजर एक्सिस अगर हो गए तो इसके अराउंड सर्कल सर्कल रोटेट हो रहे, तो तभी हमें उससे एलिप्स बन रहा है ना। और वो हम इससे भी डिफाइन, आप गौर करें, ये जस्ट लाइक हम इसको रोटेट कर, अगर मैं क्या करूँ, इसको रोटेशन दे दूं, लेट से रोटेशन दे दूं इसको 40, ये 40 एंगल पे रोटेट हमें नजर आ रहा है, और ये उससे एक एलिप्स बनता है। इज दिस क्लियर जनाब के नहीं? यस सर। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। शाबाश। They have only 21 guys online. I don't know why the other people are not here. सर अगर हम इसका दोबारा एंगल मालूम करना चाहें तो फिर इसका भी डायमेंशन से मालूम कर सकते हैं कि ये कौन से एंगल पे पड़ा हुआ है हमारे पास। I don't think so. ऐसा कोई कमांड नहीं है मेरे पास, मेरे ख्याल में, कि इसको चेक कर सके। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का पता चलता है जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये विंडो ओपन होती है, बट आई डोंट थिंक कि हमें इसे, एक कमांड है उससे शायद हमें पता चल जाए। लेट मी चेक इट। नो वी आर अनेबल टू डू इट। देखिए यहाँ पे हमें मेजर सेंटर पॉइंट के ऑर्डिनेट्स पड़ता है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, बट हमें ये नहीं पता चलता कि हमें ये कौन से एंगल पे। ठीक हो गया? ओके सर, थैंक यू। Let's come. If you want to see the properties of an object details, तो आप list कमांड लिख लें, LIST लिस्ट कमांड एंटर करें और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, जिस ऑब्जेक्ट को आप चेक करना चाहते हैं इसको सेलेक्ट करें, एंटर करें। उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने ओपन होके डिटेल्स, एरिया कितना है, रेडियस रेशो कितना है, वो सारे डिटेल्स उसके बारे में आ जाएगी। अगर रेडियस रेशो 1 है तो मतलब है कि ये सर्कल है, अगर रेडियस रेशो 1 नहीं है तो उसका मतलब है कि ये एलिप्स है। ठीक हो गया? जी सर। ओके। पॉइंट क्या चीज है? पॉइंट, हाउ डू वी डिफाइन अ पॉइंट? मेरे ख्याल में पॉइंट कर लेते हैं, फिर छोड़ लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं। काम क्लोज हो गया। पॉइंट को डिफाइन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको कोई टास्क देता हूँ, वो आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? पॉइंट क्या चीज है? पॉइंट को डिफाइन करने के लिए कैड में, अभी तो हम सर्कल वगैरह ड्रॉ कर रहे थे ना, पॉइंट तरफ आते। ठीक है? सो वेयर इज द पॉइंट? ओ ये है, आई थिंक नहीं, आई एम अनेबल टू फाइंड इट ओवर हियर। PU is a shortcut key for point, but why it's not here? Okay, it's here. Yeah, sorry. Yeah, I can change. ठीक है? पॉइंट भी हमें डिफाइन करनी होती है बहुत सी जगह पे, यू विल सी। और सिंपल बात है, पॉइंट को डिफाइन करने के लिए वी शुड नो द ऑर्डर पहले से। 5,5 इट विल बी ड्रॉन, बहुत छोटा सा नजर आ रहा है आप लोगों को। पॉइंट अगेन 7,8 इट विल बी ड्रॉन। लेट्स से पॉइंट अगेन 3,2। अगर आप मल्टीपल पॉइंट्स ड्रा करना चाहते हो तो क्या लिखो, MULTI, मल्टीपल कमांड लिखो। ठीक है? और फिर क्या लिखो, पॉइंट लिखो, POINT, या शॉर्टकट की लिखो। अब क्या होगा, आप जस्ट क्लिक करते जाओ, पॉइंट बनता जाएगा। अच्छा, बात दफा ऐसा होता है कि द पॉइंट इज वेरी वेरी स्मॉल and geometrically we define an object which has 0 dimensions, we call it point.
ऐसा है ना geometrically? जी सर। You can see that the point has very zero dimensions over here. We are not able to define its radius, diameter, or length, and so on. It's just a point. But in CAD, we have some advantage that we can increase the size of the point relatively to the screen or absolutely, but that will be not giving it, that will not mean that we are changing the point concept, but we are just changing its shape or type for the visibility purposes, to be clearly visible in the drawing. Because if you draw some points in the drawing and you just print it, so that will be just a dot and that will be very difficult to interpret. So we just change its shape or size to see it clearly, to just to interpret it very easily. So we just do it by changing its shape and type. So with points, we have three main things keep in mind. One is its size, its shape, and its display. It's just three things: size, shape, and display. Okay? So to open the point manager window, we have two things: PD mode and PD size. PDMODE mode. I'm typing it. PD mode. Point display mode. Enter. And it has different values like 0, 1, 2, 3, 4. Let's say I'm changing it to 4. You can see the point has a changed size now. Change shape now. The shape different. The shape is changed. PD mode. Let's say write the type 3. Type 3 value. It has changed its shape. It's a display mode of the point. And if I press 1, it will disappear. Point is here, but it is not present, displayed. So if you want to display a point, either 0, it will be just a simple normal point, and if you give it another shape, you will select other value. From where we will get this values, we can take it from the help. I will just show you how can we take these values from the help. Okay. हमें हेल्प से पता चलता है कि इसकी क्या क्या, हमें एक दफ़ा यूज़ करने में पता चल जाता है कि ये वैल्यू है. तो अगर मैं यहाँ पहले से पीडी मोड में दे दूँ 99, इट विल हैव अ डिफरेंट शेप. अगर मैं पीडी मोड में दे दूँ लेट्स से 66, इट माइट हैव अ डिफरेंट शेप. ठीक है. तो ये हमें पता होता है हेल्प से हम ले लेते हैं, एक दफ़ा हम जान लेते हैं कि इस शेप की पॉइंट के लिए क्या वैल्यू है, फिर हम वो यहाँ से दे देते हैं. You can see the PD mode is changing its shape. It's changing. अगर इसको साइज को कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए PD साइज यूज करते हैं. PDSIZE PD साइज. एंटर. PD साइज वैल्यू 0 है ना, अगर मैं इसको 1 दे दूं तो ये इसको डबल कर देगा, इसके साइज को डबल कर देता है, बड़ा कर देता है. अब ये देखिए, these are still points. It has no dimensions, but its shape is different. We can easily interpret it, we can easily identify it, and we can easily show it in the drawing if we want. Let me go to the help and see what we can see in the point point. Find command. Okay. देखिए PD size and PD mode is over here. अगर मैं PD mode को क्लिक करूं तो it is telling me everything about the point. ये हेल्प से मैं ले आ रहा हूँ, कैट के हेल्प से. Who is this? Kindly switch off, turn off your mic. Who is this? असद. So we are here. देखें ये वैल्यूज हमें बताता है, ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है और सारी चीजें बताता है कि 1 is specifies nothing to display, 0 is specifying point, 2 is specifying plus, cross, vertical line, फिर आगे कुछ वैल्यूज हैं. ये सारी चीजें रिप्रेजेंटेशन के मैंने आपको बताया था. ये डिफरेंट वैल्यूज इसको गिवन है और इसी के मुताबिक इसको शेप देता है. सिमिलरली पीडी साइज इसकी साइज को कंट्रोल करता है रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए, उसको कम या ज्यादा नहीं करता पॉइंट को. इज दिस क्लियर कि नहीं? वैल्यूज आप यहां से देख सकते हो हेल्प से और उधर से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो. इज दिस क्लियर?
हेलो, यस सर, यस क्लियर है। सर, यस सर। ठीक है जनाब। अच्छा, इसको करने के लिए एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। दैट वाज पीडी साइज एंड पीडी मूड एंड आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट। मैं पीडी साइज लिखता हूँ, इंटर करता हूँ, मैं इसको 0 वैल्यू देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली आप एक्चुअल साइज पे आ जाएगा। अगर इसको चेंज करना चाहते हो यू कैन चेंज इट 2 3 4, इट्स अप टू यू। एक विंडो से करने के लिए इसके लिए कमांड है DDP DDP टाइप। एक विंडो ओपन होते हैं और यहाँ से भी वो चीज आप सेलेक्ट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ नोइंग द वैल्यू। अगर ये कमांड आपको पता हो, DDP DDP टाइप, आई डोंट नो पी टाइप से होता है कि नहीं होता, पी टाइप से भी होता है, ठीक है, पॉइंट टाइप। और उधर से आप ये 0 वैल्यू, ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 और फिर वैल्यू चेंज होती रहती है। और ये देखिए, ये पॉइंट साइज जो है ये 5% इंक्रीज होता है जब आप चेंज करते हो। रिलेटिव स्क्रीन जो आपका स्क्रीन है उसके मुताबिक, अगर एब्सोल्यूट करोगे तो वो डिफरेंट तरीके से होगा। देखिए 5 यूनिट्स बढ़ रहा है, ऐसा आ गया। सॉरी, मैंने पी टाइप वाले से लिख किया था, इसमें जरा क्लियर हो जाएगा आपको। अगर मैं ये रिलेटिव में, अगर मैं एब्सोल्यूट में, अगर मैं इसको रिलेटिव कर लूं, ये 5% टू द स्क्रीन बढ़ रहे हैं, 5% टू द स्क्रीन आपके डिस्प्ले को। एक रिलेटिव यूनिट्स है जो हम सेलेक्ट करते आ रहे हैं ना, और एक है एब्सोल्यूट वैल्यू जो आपकी यूनिट सिस्टम है, उसमें अगर आप उतना बढ़ाना चाहते हो तो ये बढ़ जाता है। तो DDP टाइप या पी टाइप अगर आप सिंपल दे दे तो उससे आपका ये चीज चेंज होता रहता है। हम रिलेटिव भी रखते हैं, उसको डिपेंड करता है कि किस शेप में लेके आना चाहते हो, इसमें आ जाता है। इज दिस क्लियर कि नहीं? पॉइंट, ये देखिए पॉइंट से मैं एक और पॉइंट डिफाइन करता हूँ, PO इज अ शॉर्टकट की पॉइंट। मैं कहता हूँ लेट से यहाँ पे डिफाइन करो, यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं उसी शेप में। अगर आप अगेन PD मोड में आ जाए, शेप चेंज करना चाहते हो चेंज कर दो, इसको 66 दे दो, ये दूसरा शेप आ जाएगा। PD मोड में आ जाओ, लेट से इसको 34 दे दो, ये डिफरेंट शेप आ जाएगा। 33 दे दो, ये डिफरेंट शेप नहीं है तो मौजूद, तो हम दोबारा 34 पे जाते हैं। तो यू कैन चेंज इट शेप। अब पॉइंट हमें डिफाइन करनी होती है बाज़ दफा एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। रेक्टेंगल हमारा रहता है वो अभी थोड़ा सा, इसमें कुछ काम है वो हम बाद में कर लेंगे। सिमिलरली रिवीजन क्लाउड रहता है, ब्लॉक रहता है, हैच वगैरह हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। तो हमारा ड्रॉ टूल बार खत्म हो जाएगा, फिर हम मॉडिफाई टूल बार की तरफ मूव कर लेंगे। नाउ आई हैव सम टास्क फॉर यू पीपल। मैं आपको एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे शो करता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ, और वो चीज़ आप लोगों ने ड्रॉ करनी होगी, ठीक। सो लेट मी सी व्हाट आई कैन शो यू पीपल टू ड्रॉ। द वेरी फर्स्ट थिंग यू जस्ट नीड टू ड्रॉ दिस थिंग। चले, यहाँ पे मैं एक चीज़ को एक में स्विच करता हूँ, अपनी प्रेजेंटेशन को स्क्रीन से उसको विंडो पे स्विच करता हूँ ताकि आपको आसानी हो उसको देखने में। तो मैं विंडो को करता हूँ, ये चीज़ आपने प्रैक्टिस करे इस पे, शाबाश। मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ आपके लिए। आई होप इट इज क्लियर टू यू पीपल। आप इसको ड्रॉ करें, शाबाश, अपने कैड में इसको ड्रॉ करें, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ सकते हैं आगे। और मैं टास्क वगैरह आपको देख लेता हूँ कि हम टास्क को आपको दे दें। Now you have learned the line command, so you will be able to draw all these things. उसको ड्रॉ करें, फिर उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट है मैं आपको देता हूँ, उसको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। और मुझे फिर सबमिट भी करना होगा। इस चीज़ को मैं आपको बता दूँ कि कब सबमिट करना है। ये मैं आपको अपलोड भी कर दूंगा उस पर, बल्कि मैं भी कर लेता हूँ। लेट मी डू इट राइट नाउ, भूल ना जाऊँ।
जी जनाब, आर यू पीपल फॉलोइंग मी के नहीं? सोए हुए हैं? I will हाँ need you सर, people to कर रहे turn. हैं काम। I will need you people to turn on your cameras. मैं किसी को भी कह सकता हूँ कि अपना स्क्रीन शेयर करिए, कैमरा ऑन करे, ठीक है? तो यू मस्ट, ओके सर, ओके। आपको भी मसला नहीं होना चाहिए जब मैं वो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। ठीक है सर। As I'm seeing some guys are sleeping. Okay. I'm uploading this task and you have to submit it. ठीक है, मैं टास्क के उसमें कर लेता हूँ, आपने इसको सबमिट करना होगा। असाइनमेंट भी और टास्क पे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। assignment. यार काइंडली आप स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दे कि अगर ये क्लास में नहीं आती इस तरह तो फिर ये सही तरीका नहीं है, ठीक है? आई हैव टू रिपोर्ट इट देन। अगर किसी का कोई जेन्युइन मसला है दे हैव टू कम्युनिकेट फर्स्ट, अगर नहीं है तो दे हैव टू बी प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक हो गया? तो काइंडली उनको कम्युनिकेट कर ले कि सर ये कह रहे थे कि यू मस्ट बी प्रेजेंट इन द क्लास। सर हम इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको सेंड कर दें गूगल नहीं, क्लासरूम। स्क्रीनशॉट नहीं करेंगे माय डियर। आप सर ये मैं आपको ये बताता सर हूँ, आपको फाइल को कैट फाइल सेव करेंगे, मैंने आपको बताया अभी तक क्लास में, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है? अपने फाइल को सेव करेंगे विद योर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और सेक्शन, वो उसका फाइल का टाइटल होगा, चाहे 2 है, 3 ऑब्जेक्ट है, 4 ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया? यस सर। अगर वो टास्क है तो उस टाइटल में उसको टास्क दे देंगे। लेट से आपका नेम है हामिद, आपका फिर डैश के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो, फिर डैश के साथ जो है आप सेक्शन डाल दो, और एंड में डैश डाल के उसके बाद डाल दो भाई डैश या अंडरस्कोर डाल दो। उसके बाद आप वो टास्क है, टास्क 1 है, असाइनमेंट 1 है, जो भी है वो, ये आपके फोल्डर का नेम होगा, और इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे आप ड्राइंग फाइल आप डाल देंगे अलॉन्ग विथ पीडीएफ। पीडीएफ में आपको बताता हूँ कि पीडीएफ कैसे जनरेट करते हैं किसी भी फाइल से। फिलहाल आप ड्राइंग फाइल जमा करें, पीडीएफ हम बाद में फिर कर लेते हैं। खैर ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम, नेक्स्ट असाइनमेंट से हम पीडीएफ शुरू करेंगे। अभी मैं वो इंक्लूड करूँगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा।
Nihal, uh, there you are kindly requested to inform all the students to be present in the class. Otherwise, I will report this to the chairman because you need to be present in the class. Yes, we were talking about the create and सर हमारा सीआर चेंज हो गया who is new here? ये सर तौसीफ मुझे नहीं बताया गया इसलिए मैं उसको बार बार किया. Okay. They have 10 points. Okay. All the students, the due date for this is 9th of September. 12 p.m. ठीक है. I have uploaded task 1. ठीक है, आप लोग जरा इसको चेक कि मैंने गलत तो नहीं किए. सॉरी, ये गलत हो गया. इसको चेंज करता हूँ. अच्छा जनाब, 1-2 मिनट के लिए यहाँ पे मुतवज्जे हो. बन गया वो चीज़ कि नहीं? इट्स टेकिंग टू मच टाइम. यस सर बन गया बन गया सर ये बन गया, ये तो बन. ठीक है. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. ठीक है, और मैं आपको जो है एक चीज़ दिखाता हूँ डायमेंशंस के हवाले से. ठीक है, एंटायर स्क्रीन कर दो. ओके,
आई होप यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन। नजर आ रहा है कि नहीं? अच्छा अभी हो गया, ठीक है। अच्छा, किसी भी दो किस्म के डायमेंशन हमारे पास है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हम नॉर्मली वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी सिंपल डायमेंशन, रेडियस, डायमीटर और लेंथ के हम कर लेते हैं, बाकी हम बाद में करेंगे। लेट्स से मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ यहाँ पे, या कोई पॉलीगॉन ड्रा करता हूँ, ठीक है। पॉलीगॉन में ड्रा करता हूँ एक यहाँ पे, ठीक है। मुझे एच साइज का पता है, H5 है, एच का पता है। मैं यहाँ पे पॉलीगॉन ड्रा करता हूँ, और now you can see we have dimensions. If you go to the dimension toolbar, we have linear dimension and aligned dimension. The difference between these two is very clear, that when you select linear dimension, it only tells us about the horizontal and vertical coordinates, यहाँ से यहाँ तक ये हमें horizontal value बताएगा। अगर यहाँ पे मैं चेक करूँ, it will only tell us about the vertical distance. It cannot tell us about the horizontal one, the angular one. अगर यहाँ से यहाँ तक मैं चेक करूँ ना, या तो ये मुझे ये, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक, या तो ये मुझे ये बताएगा और या ये बताएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? सिर्फ एक्स एक्सिस का वैल्यू हमें बताता है, हमें बेसिकली ऑर्डर पेयर बताता है, हमें ये नहीं बताता कि ये कौन सी वैल्यू है, ये इस एक्चुअल लेंथ क्या है, ये प्रोजेक्शन बताता है आसान अल्फाज में। समझ आ रही है? अगर Yes, आपका sir. ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, तो उससे हमें डायरेक्ट पता चल जाता है। वी नॉर्मली यूज अलाइंड डायमेंशंस, वो आसान होते हैं हमारे लिए। डायमेंशंस अलाइंड, इसको क्लिक करो, ये इसको पैरेलल होगा हमेशा, जो एक्चुअल उसका लेंथ होगा वो हमें बताएगा, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो। समझ आ रही है? चाहे जो भी लेंथ हो, जहां पे भी आप प्लेस करना चाहते हो, इसको ड्रॉ करके बताएगा। ठीक, तो हम नॉर्मली अलाइन डायमेंशन, या भी आपने ऑब्जेक्ट ड्रा किया तो उसमें अलाइन डायमेंशन यूज हुए थे। खैर वो तो नाम लिखी हुई थी कमांड प्रॉम्प्ट के साथ, लेकिन अलाइन डायमेंशन हम यूज कर सकते हैं। असाइनमेंट में मैंने आपको दिया हुआ है, जो टास्क मैंने अपलोड किया उसमें है अलाइन डायमेंशन, तो आपने अलाइन डायमेंशन की को ही यूज करना है। रेडियस के लिए सर्कल है, एक सर्कल, उसके रेडियस के लिए यहाँ पे आप देख लिए रेडियस है और यहाँ पे डायमीटर है, ठीक है। तो रेडियस के लिए आप रेडियस पे क्लिक करें, बस सर्कल को सेलेक्ट करें, उसको रेडियस को जहाँ पे भी आप प्लेस करना चाहते हैं उसको प्लेस करें। डायमीटर शो करना चाहते हो, डायमीटर पे क्लिक करें, सर्कल पे क्लिक करें, और आपका डायमीटर यहाँ पे आ जाएगा। डायमीटर का सिंबल पाई उसके साथ है। एंगुलर आर्क है, एंगल कहते हैं दो के बीच में, उससे हम एंगुलर डायमेंशन यहाँ से यूज कर सके। यहाँ से डायमेंशन से एंगुलर डायमेंशन हम सेलेक्ट करते हैं, दो लाइन सेगमेंट्स के यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितना एंगल है, 108 है। हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कि दिस इज 108। ठीक हो गया। तो ये हमें जो है क्या नाम है, कुछ बेसिक डायमेंशन ये हमें पता होने चाहिए। लीन लेंथ डायमेंशन में सर्कल हो गया, डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया, एंगल हो गया, एंड अलाइन। बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे, डायमेंशन स्टाइल कैसे सेट करते हैं और ये चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अब आपको ये अंदाजा हो कि हम डायमेंशन कैसे देते हैं। Is this clear to all of you? Yes, sir. Hello? If there's any problem, you can ask me. Yes, sir. नहीं है? सर वो फाइल सेव करने वाला आप बता रहे थे कि किस तरह करनी है, वो एक और बात बता दें। अच्छा, जी जी, फाइल सेव का बता देता हूँ, और क्या बता दूँ? देखिए, फाइल सेव ये है कि आप फाइल को जब सेव करते हो ना, तो कैसे करोगे? फाइल सेव एज या सेव करोगे, ठीक है। अगर आप सेव या सेव एज का, तो एक लोकेशन पे सेव करोगे इसको, और इसको नेम क्या दोगे? लेट्स से माय नेम इज खान अंडरस्कोर, रजिस्ट्रेशन नंबर इज 2233 अंडरस्कोर सेक्शन बी अंडरस्कोर, इस तरह के कुछ पता हो। टास्क 1 इस तरह सेव करो, 1A 1B, क्योंकि एक टास्क में तो 4-5 सब्जेक्ट हो सकते हैं ना। टास्क 1A 1B
1C इस तरह का नेम दे दो, असाइनमेंट 1 2 जो भी आपका नेम है, और जो फोल्डर होगा उसका यही नेम होगा, लेकिन उसमें ये ABC नहीं, सिर्फ टास्क ये होगा। आप फोल्डर क्रिएट करो, उसमें सेव कर लो। गेटिंग माय पॉइंट के नहीं? यस। मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ। लेट्स क्रिएट अनदर वन यहाँ पे, लेट्स से, ठीक है, इसको यही नेम देता हूँ और यहाँ पे सेव करता हूँ। इसमें ये मेरा ऑब्जेक्ट सेव हो रहा है, अभी ऑब्जेक्ट उधर सेव हो गया। इस नाम से मैंने जो है डाउनलोड्स नहीं, डॉक्यूमेंट्स में किया, डॉक्यूमेंट्स में मैंने ये वाला फोल्डर, इसमें वो फाइल आ गया। बाज़ अब ऐसा होता है कि मेरे पास कैट 17 है, शायद आप कैट 20 में उसको बना ले, तो फिर 17 में वो ओपन अक्सर नहीं होता, वो कंपेटेबिलिटी इशू होते हैं। इसको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको PDF में सेव करते हैं। ये तो रैंडम ड्राइंग है, जब आप प्रॉपर डायमेंशंस के साथ बनाएंगे, लिमिट्स वगैरह सेट करेंगे, तो उसके मुताबिक आपका ड्राइंग सही आएगा। उसके लिए हम प्लॉटिंग करते हैं, प्लॉटिंग, ठीक है। प्लॉटिंग कैसे करते हैं? सेव एज में तो कुछ ऑप्शन नहीं है, ई प्लॉट या प्लॉट पब्लिश्ड वेब या प्लॉटिंग हमारे पास है, ठीक है। उसके लिए ये है कि हमसे क्या करते हैं, कंट्रोल P, कंट्रोल P, और क्योंकि हमारे पास प्रिंटर यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ड्राइंग टू PDF सेलेक्ट कर, राइट टू क्रिएट PDF नहीं, ड्राइंग टू PDF, ये वाला ड्राइंग टू PDF जो हमारा पेज साइज हमने सेलेक्ट किया होता है। अब यहाँ लेट्स से हम A4 सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे डिस्प्ले भी कर सकते हो, प्रीव्यू देख लो, जो चीज डिस्प्ले में वो सब के सब आ जाएगा, डिस्प्ले में जो भी चीज है वो आ जाएगी। हो गया, इसको क्या करो, प्लॉट करो, और इसको उसी फाइल में सेव करो उसी नाम के साथ। अभी PDF में आपके पास आ गया, ठीक है। तो मैं इजीली, लेकिन इसके साथ आपका नेम, खैर वो तो आपका ऑलरेडी टाइटल में है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे नेम हो। अभी नेक्स्ट ड्राइंग्स में फिर आप नेम देंगे, टाइटल बायर वगैरह बनाएंगे, वो आप इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, लेकिन अभी मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे इसको टाइटल वगैरह दे रहे हो। इज दिस क्लियर नाउ? हेलो? ओके सर। यस सर, यस सर, क्लियर। थैंक यू। So let me take attendance. We have section B now. Do we have double 46 Yes. 4656 रजिस्ट्रेशन नंबर या क्लास नंबर आप लोग को याद हो? रजिस्ट्रेशन नंबर से कर 4656 प्रेजेंट है, एब्सेंट है? अच्छा, नेक्स्ट है भाई 46 प्रेजेंट सर, 89 प्रेजेंट 4689 प्रेजेंट। असद who is present? ठीक है, नेक्स्ट कौन है भाई? नेक्स्ट है 4725 एब्सेंट है। नेक्स्ट है 4763 प्रेजेंट सर। 4763 प्रेजेंट है। अच्छा, ऑन 4804 4657 प्रेजेंट सर। 4690 प्रेजेंट। 4726 4764 4805 प्रेजेंट सर। जी, who is this? 4764 प्रेजेंट सर। 4805 ठीक है। सर 4804 एब्सेंट कर दिया, मेरा माइक नहीं वो यूज हो रहा था, प्रेजेंट हूँ सर। ये 39th नंबर पे है। ठीक है, 4804। अच्छा आगे जे देखिए, अपना नंबर देखते जाए और मुझे प्रेजेंट बोलते जाए, ये ना 4658 नहीं, ये एब्सेंट है। 4691 सर कैमरा 4728
एब्सेंट है। 72 है खतनात। 4729 है सर मेरा, 4729 है हसनात अहमद। वो नीचे आएगा। ठीक है सर। 4765 4806 4659 4692 4729 प्रेजेंट। प्रेजेंट। ठीक है। 4767 सर 4807। सर जी जी 4767 ने मैसेज किया है कि मैं प्रेजेंट हूँ, माइक नहीं काम कर रहा। एक मिनट। एक बताए पहले। 4767 हु इज दिस गाय? सर मैसेज में यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है कि प्रेजेंट हूँ। ठीक है नेक्स्ट। सर 4806 प्रेजेंट हूँ, लेकिन मैं काम नहीं कर रहा था तो उस वजह से बोला नहीं था। 4806 हो गया प्रेजेंट। नेक्स्ट 4807 सारे प्रेजेंट है यार। जो भी हैं बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट वो बोलते जाए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते जाए टेक्स्ट में। चले मैं यहाँ से फिर देख लूंगा, ये मुश्किल बन रहा है। 4658 प्रेजेंट है। देखिए 464764। सर जिनकी लगी है वो चले जाए। आपकी मर्जी है। क्यों कहीं जाना है, सब्जी लानी है? फोर सेवन सिक्स थ्री प्रेजेंट है। 4762 प्रेजेंट है। 4662 प्रेजेंट है। 4662 रजिस्टर नंबर सही डाला करे भाई। 477 4646770। नेक्स्ट कौन है भाई? 4729 प्रेजेंट है। 474658 rest are absent I think. ठीक है। How many present do we have? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. What about the other four guys? There were 14 15 in line. Kindly सारे सर यहाँ पे अटेंड। 469 जी बोले जरा। सर 4 4695 शामिल शौकत प्रेजेंट। 695 4695 4695 प्रेजेंट है। ठीक है नेक्स्ट। कोई ऐसा हो जिसके अटेंडेंस ना लगी हो? शाबाश। Rizwan, what is your registration number? Kindly tell me your registration number. या टाइप कर ले रिजवान। आई डोंट हैव नेम्स इन द लिस्ट। 4658 है सर इसका। Is present 4658 is present. ठीक है जनाब।
So these are the guys who are present, the rest are absent. If you have any question, you people can ask me. Otherwise, I'm going to stop the recording and